Hello everyone, my name is Dr. Poonam Chaturvedi and today I'm going to discuss about one of the important topics of microeconomics, that is demand. And for understanding purpose, we'll try to have this discussion in both English as well as Hindi language. So let's get started. तो फर्स्ट हम बात करेंगे कि डिमांड क्या होता है. सो डिमांड इन सिंपल लैंग्वेजेस वी कैन से कि डिमांड इज द डिजायर ऑफ अ कंज्यूमर टू बाय अ पर्टिकुलर गुड. But if we talk about economics, demand in economics, there are two things which are very important for the creation of demand. The first thing, there should be willingness or desire to buy, but the other thing is there should also be the ability to buy for a good. इसको एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझेंगे, सपोज कोई कंज्यूमर किसी मार्केट में जाके एक कार परचेज करना चाह रहा है एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में. सो फर्स्ट ही हैज शोन द डिजायर that he wants to purchase a car. So we have one condition, that is there is willingness to buy. But the other thing is that the value of the car is, suppose if the value of the car is 5 lakh rupees. So if he has the money to pay for the car, then we'll call that he has the ability to buy. So then the demand will be created. So कभी भी डिमांड क्रिएट करने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी है. पहला कि विलिंगनेस होनी चाहिए या डिज़ायर होनी चाहिए वो चीज़ को परचेज करने के लिए. दूसरी चीज़, देयर शुड बी एबिलिटी टू by the product, then only we can say that demand is created. So simple definition में हम कह सकते हैं कि demand is defined as a schedule that shows the amount of good or services the consumer are willing and able to purchase at each price in a set of possible prices during some specified time in a specified market. Then other than, so two things that are important is desire or willingness, and the other thing is ability. Other than that, we have seen in the definition that there are two more things which are essential. That is, demand is mentioned at a specified period of time and in a specified period of specified market as well. Then the next thing is demand and quantity demanded. So demand जो होता है और demand quantity demanded, there is a difference between both these terms. So demand क्या होता है कि ये various prices पे अलग अलग prices में कितनी different number of quantities कोई consumer purchase करना चाहेगा, that is demand. So पूरा जो schedule होगा जहाँ पे अलग अलग prices पे consumer अलग अलग quantities को purchase करना चाहेगा उसे हम कहते हैं demand. Whereas quantity demanded, it means the particular quantity that a consumer has demanded or the consumer will buy at a particular price. So as it is said in the definition, quantity demanded of a good is the amount of good or service which consumer plans to buy at a particular price. So demand का मतलब अलग अलग prices पे जो अलग अलग quantities consumer purchase करेगा, and quantity demanded का मतलब होता है कि एक particular price पे कितना quantity एक consumer is buying. Then next is demand schedule and demand curve. So demand schedule क्या होता है? It is simply a table which shows different prices and corresponding the different quantities that the consumer will purchase at each given price. So ये जो table है जहाँ पे हमारे पास given है कि that at 5 रुपए पे if the price of the commodity is 5 rupees, so consumer वहाँ पे 3 units of the good demand करेगा. When the price is 4 rupees, the consumer is demanding 6 units of the good, and so on. So this whole table, it is known as the demand schedule. एंड अगर हम इसी सेम टेबल को डिमांड शेड्यूल को एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे देंगे तो उसे हम कहते हैं डिमांड कर्व. So demand curve is nothing but it is the graphical presentation of the quantities of the good that a consumer has demanded and at various prices. So we can see that in the demand curve, in the horizontal axis we have the quantity demanded, and in the vertical axis we have the different prices. And this curve, DD curve, is known as the demand curve. And demand curve is always downward sloping. Then the demand can be for an individual as well as for the market as a whole. So individual demand क्या होता है कि एक individual consumer कितना particular price में कितना commodity purchase करना चाहेगा वो हो जाएगा. उस curve को अगर हम draw करेंगे that will be individual demand curve. So individual demand is a list of prices together with quantities that a consumer will purchase. और मार्केट डिमांड क्या होगा? जितने भी कंज्यूमर्स एक मार्केट में होंगे उनका कलेक्टिव उनका जो डिमांड होगा वही उसी को हम क्या कहते हैं? मार्केट डिमांड कहते हैं. So market demand is the sum of demand of all the consumers in a market for a given commodity at a specified period of time. सपोज एक मार्केट में n नंबर ऑफ कंज्यूमर्स है, हर इंडिविजुअल कंज्यूमर की कुछ डिमांड होगी. अगर उन सारी डिमांड्स को हम
सम कर देंगे, we'll get the market demand. So market demand curve it can be obtained by adding horizontally the amounts of good which different individuals together wish to buy at each price. So we can understand it better with help of a diagram. So यहाँ पे जो first figure है, it is the demand curve of consumer A. The second one is the demand curve of consumer B. And अगर हम इन दोनों को add कर देंगे, then we'll get the market demand curve. So market demand curve is simply the sum of all the demand curves of all the individuals. The law of demand, it explains the functional relationship between the quantity demanded of the commodity and the price of the commodity. So ये law of demand actually कहता है कि there are different factors जो कि demand को affect करते हैं, which we will study in the next slides. So if we consider all those factors equal, if we consider them constant, and we consider only price of the commodity. So according to the law of demand, when the price of the commodity increases, the quantity demanded of it that will decrease, and if the price of the commodity rises, then the quantity demanded will decline. So लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है. It says that if other things remain constant, then there is an inverse relationship between price and quantity demanded. तो लॉ ऑफ डिमांड में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो assumption होता है वो होता है that is constancy of the other things, which is indicated by a Latin phrase ceteris paribus. And these other things which we have considered assumed constant, they include the preference of the consumer, taste and preference of the consumer, income of the consumer, and the prices of the related goods. We can understand this law of demand better with the help of an example. So here on the horizontal axis, we have the quantity demanded of the commodity, and on the vertical axis we have the price which is given in rupees, and this is our demand curve. So we can see that when the price of the commodity is 120 rupees, जब प्राइस कमोडिटी का 120 है तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो हो जाएगी 10. एंड जब प्राइस धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, जब प्राइस हमारा 100 हो गया, उस टाइम पे जो क्वांटिटी डिमांडेड है दैट इंक्रीज फ्रॉम 10 टू 20 kgs. फर्दर जब और डिक्रीज होगा 80 पे हम पहुंचे तो प्राइस हैज डिक्रीज और क्वांटिटी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है. सो नाउ वी हैव मूव टू 30 kgs. ऐसे ही करके, so we can see that the law of demand says that there is an inverse relationship between price and quantity demanded, and that is why the demand curve is also downward sloping. So there are some exceptions to the law of demand. The first one is the giffen goods, which is a type of inferior goods. So based on the income of the consumer, there are two types of goods. एक होते हैं normal goods, दूसरे होते हैं inferior goods. तो नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ने की वजह से जिन गुड्स की डिमांड इंक्रीज हो जाती है उन्हें हम बोलते हैं नॉर्मल गुड्स. और अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होने की वजह से कुछ गुड्स की डिमांड कम हो जाती है, उन गुड्स को हम कहते हैं इंफीरियर. एक एग्जांपल, जो अगर इनकम इंक्रीज हो रही है और कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा क्लॉथ्स, पहले से ज़्यादा क्लॉथ्स को परचेज कर रहा है, तो वो हो जाएगा एग्जांपल नॉर्मल गुड्स का. दूसरा इंफीरियर गुड का एक एग्जांपल हो सकता है कि सपोज कंज्यूमर की जब इनकम कम थी तब वो क्या कर रहा था कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज कर रहा था, बट जैसे ही उसकी इनकम इंक्रीज हुई वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन पे स्विच कर जाएगा. सो हियर द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इज एन एग्जांपल ऑफ इंफीरियर गुड्स. So giffen goods are also a type of inferior goods, and ये जो phenomena है it was given by Sir Robert Griffin, and it is also known as Giffen paradox. So what it says is that with the rise in the price, when the rise in the price of a commodity is followed by an increase in the demand, while the fall in the price is followed by the reduction in the demand of a good. मतलब जब भी किसी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज होगी हम उसे पहले से ज़्यादा परचेज करेंगे, और जब उसकी प्राइस डिक्रीज होगी हम उसे पहले से कम परचेज करेंगे. सो इट सेज दैट देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड एंड द प्राइस ऑफ द गुड. इसका एक एग्जांपल देख सकते हैं. अगर suppose there are some poor people and they spend majority of their income on the inferior food grains. For example, we have taken the case of bajra. So he is left with very lesser amount of the other items. अगर उसका जो कंजम्पशन का जो मेजर कंजम्पशन बास्केट है उसमें वो स्पेंड करता है बाजरा के ऊपर, एंड अगर उसका इनकम सेम रहे और बाजरा के प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे, तो क्योंकि उसे कंजम्पशन तो कंटिन्यू करना है, तो अब वो पहले से ज़्यादा पैसे स्पेंड करने लगेगा बाजरा में, बिकॉज इट हैज़ बिकम प्राइसियर देन अर्लियर एंड ही स्टिल हैज़ टू कंज्यूम इट. सो उसका प्राइस जो है, जितना ज़्यादा प्राइस बढ़ा है उसका जो डिमांड होगा
it will increase rather than decreasing. So here we can see that there is a direct relationship between price and the quantity demanded. So this is an example of a given goods. जो दूसरा exception है to the law of demand, that is the Veblen effect. This effect was given by Thorstein Veblen, and what it says is that when purchasing a good is associated with social distinction, then consumer will go for that good even at higher prices. जब भी कोई जो प्रेस्टिजियस गुड्स होते हैं उसको जनरली लोग एसोसिएट करते हैं अपने सोशल स्टेटस के साथ। मीन्स जितना ज़्यादा किसी भी कमोडिटी का प्राइस होगा और उससे जितना हम ओन करेंगे उतना हमारा जो स्टेटस है इन द सोसाइटी दैट विल इंक्रीज। इसका बेस्ट एग्जांपल है डायमंड। तो डायमंड जितने ज़्यादा महंगे होंगे उसको उतना ज़्यादा प्रेस्टिजियस समझा जाएगा, और जो उसको ओन करेगा उससे सोशल उसका सोशल स्टेटस जो है दैट विल बी हायर। सो फॉर सोशल स्टेटस पीपल जनरली they spend more on the goods even at the higher prices. So this effect is known as Veblen effect. Then another exception to the law of demand is the high priced commodities. So when the consumers they view that those commodities which are superior are priced higher, then they do not mind to buy more of the same at the higher prices. मतलब अगर कंज्यूमर के दिमाग में ये हो जाता है कि जितना ज़्यादा हायर प्राइस उतनी ज़्यादा बेटर कमोडिटी, तो वो ज़्यादा प्राइस पे भी ज़्यादा डिमांड करने में उनको कोई इशू नहीं होता है। देन द नेक्स्ट एक्सेप्शन इज फियर ऑफ शॉर्टेज। सो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर किसी साल में रेनफॉल जो है किसी कंट्री में वो कम हुआ है, उसकी वजह से फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन अफेक्ट होगा, जिसकी वजह से उसके प्राइसेस मार्केट में ऑलरेडी हायर होंगे। बट अगर जो कंज्यूमर है उसकी ये एक्सपेक्टेशंस है कि प्राइस अभी तो हायर है बट आगे चल के और ज़्यादा हाई होने के चांसेस हो सकेंगे। इसकी वजह से कंज्यूमर क्या करेगा, करंट में even though the price is higher he will still increase the demand of the commodity in the expectation or in the fear कि आगे चल के prices और ज़्यादा higher हो सकते हैं, या फिर there can be fear of shortage. So that is also in that case also higher the price more will be the demand. So this is also an exception of the law of demand. Then we come to the factors determining demand. So there are several factors other than price which affect the demand of a commodity. So उसमें पहला factor आता है taste and preference of the consumer. So a good for which the consumer's taste and preference are greater, its demand will be larger and its demand curve will lie at a higher level. तो जिस भी कमोडिटी के लिए जो कंज्यूमर के जो प्रेफरेंसेस होते हैं या उसके जो टेस्ट होते हैं वो जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा उसका जो डिमांड होगा उन गुड्स का वो ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो जनरली जो चेंज इन फैशन या फिर जो प्रेशर ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स, जो भी मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो अपना एडवर्टाइजमेंट करके जो लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस है उसको चेंज करते हैं, उसकी वजह से जो डिमांड है गुड्स की वो भी चेंज हो जाती है। देन द नेक्स्ट फैक्टर इज द इनकम ऑफ द पीपल। तो जितना ज़्यादा लोगों की इनकम बढ़ेगी उनकी परचेजिंग पावर उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से जो डिमांड होगा गुड्स का वो भी इंक्रीज होगा। Then the next factor is wealth. So similar to income, with the increase in the wealth of the individual, the demand curve will also shift higher, or it will shift to the rightward, right direction. Then the next is change in the prices of the related goods. So the demand किसी भी commodity की जो demand होती है, it is affected by its own price and it is also affected by the price of the related goods. Especially अगर वो related goods उसके complements होते हैं या फिर substitutes होते हैं. So what are complements and substitutes? So complements मतलब जो भी goods साथ साथ में use किए जाते हैं उन्हें हम complements कहते हैं. For example, bread and butter. एंड सब्सटीट्यूट्स आर वो गुड्स जो कि आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफी आर द एग्जाम्पल ऑफ सब्सटीट्यूट. So how the change in the price of these goods, substitute and complements, affect the price of the commodity. So we'll see it with an example. Or so when with the rise in the price of good A, the demand for good B increases. Means suppose good A is tea and good B is coffee. So if the price of tea increases, what will happen? The consumers will start the demand for the tea that will decrease. When the price of tea increases, the demand for it decreases, and now the consumer will substitute the tea with coffee. So in place of tea वो consume करने लगेंगे coffee को, if the price of the coffee remains same. So such type of goods are known as substitutes. Then the other case is when with the increase in the price of a good A, the demand for good B decreases. Then such type of goods are known as complements. Example है bread and butter. So इस केस में अगर हम देखेंगे कि ब्रेड का प्राइस अगर इंक्रीज होगा, प्राइस इंक्रीज होने की वजह से लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, जब भी प्राइस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी.
सो अगर ब्रेड का प्राइस इंक्रीज हुआ उसकी डिमांड कम हो जाएगी। अगर लोग ब्रेड को ही कम कंज्यूम कर रहे हैं तो उसकी वजह से बटर जो है, दे यूज द बटर टुगेदर विद ब्रेड, तो ब्रेड का प्राइस इंक्रीज होने से उसकी डिमांड घट गई, इसकी वजह से जो बटर होगा उसकी भी जो डिमांड होगी दैट विल आल्सो डिक्रीज। सो ड्यू टू द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द ब्रेड, the quantity demanded of butter has also decreased. So such type of goods are known as complements, and this is how the price of one good has affected the demand of other goods. Then the next factor is the number of consumers in the market. So जितने ज़्यादा consumers होंगे market में, उतना ज़्यादा ही demand है किसी भी good का, वो increase होता जाएगा. Then the next factor is consumer expectations. So consumer expectations regarding their income as well as the price of the good affect the demand for the goods. So if a person expects that his income in the next month that will increase, so he would be willing to spend more out of his current income. Similarly, if he expects that there will be increase in the price of a good in the near future, then in the present the demand for the good will increase. So अगर कोई भी कंज्यूमर को ये एक्सपेक्टेशन हो रहा है कि आगे नेक्स्ट मंथ में उसकी सैलरी में हाइक होने वाला है, तो अभी क्या करेगा, ही विल increase the demand of increase his demand of goods because he has the expectation of higher income in the next month. And similarly, if he has the expectation that the price of some commodity will increase in the coming future, so he will increase the price, increase the demand of that good in the present. Then next is income distribution. So income distribution जितना ज़्यादा equal होगा, लोगों की जो propensity to consume होगा वो बढ़ जाएगा और there will be more demand for the goods. Similarly, अगर income distribution ज़्यादा unequal होगा, उसकी वजह से the demand for good जो है वो कम हो जाएगा because जो overall जो propensity to consume होती है society की, that will decrease. So if income distribution is equal, so demand for goods will be more. If the income distribution is unequal, then the demand for the commodities will of the society that will decrease. Next, we'll discuss the movement along the demand curve, and that is the extension and contraction in demand, and the other thing is shift in the demand curve. So, the movement or the extension and contraction in demand are used when the quantity demanded rises or falls as a result of change in the price and we move along a given demand curve. तो जब भी किसी भी कमोडिटी की प्राइस चेंज होने की वजह से उसकी डिमांड चेंज होती है, तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, या तो एक्सटेंशन होता है या तो कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड होता है. एंड जो मूवमेंट होता है इट टेक्स प्लेस along the demand curve only. So extension या expansion of in demand, it generally occurs when the quantity demanded of a good rises due to the fall in the price of the good, then it is known as expansion. मतलब किसी भी commodity का price fall होगा, उसकी वजह से उसकी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी या expand हो जाएगी, so that is known as expansion. Whereas contraction is when the quantity demanded of a good falls due to the rise in the price of the commodity. किसी भी commodity का price बढ़ जाएगा, उसकी वजह से consumer उसे उसकी डिमांड को कम कर देगा. So that situation is known as contraction in the demand curve. So we can understand it better with the graph. So here we see that this graph it shows the movement in the demand curve. So here we can see that dt is our demand curve. तो जो भी contraction and expansion हो रहा है वो same demand curve के ऊपर ही हो रहा है. dt is not shifting. The dt demand curve, it is not shifting. The contraction and the expansion they are occurring in the same demand curve only. So पहला हम देखेंगे expansion का case. So suppose किसी commodity का price अर्लियर 10 रुपीज़ था, उस टाइम पे जो कंज्यूमर है वो 150 यूनिट्स उस कमोडिटी का परचेज कर रहा था. अब अगर प्राइस जो है उस कमोडिटी का डिक्रीज हो जाएगा एंड इट कम्स टू 8 रुपीज़. सो व्हाट विल हैपन then now the consumer due to the fall in the price, now the consumer is purchasing more of that commodity. So पहले 10 रुपए पे he was purchasing 150 units and now at 8 rupees वो परचेज कर रहे हैं 200 units. So we can see that there is expansion in demand. So जो consumer होगा, it has moved from A to B. So this is the case of expansion in demand. दूसरा केस होता है contraction in demand. So contraction का अगर example क्या है कि अगर at 10 rupees the consumer was purchasing 150 units. Now suppose price of the commodity has increased from 10 to 15 rupees. तो अब जैसे ही price बढ़ जाएगी तो quantity demanded जो है वो कम हो जाएगी.
So at 15 rupees, he is purchasing 100 units of the commodity. So there is contraction in demand. So 150 say he has moved to 100 units only. So this is example of contraction in demand. So the expansion and contraction in the demand curve, it occurs due to the changes in the price, while all the other factors which affect the demand, they are still constant. Now the other case is shift in the demand curve. So shift can be either there can be increase in the demand or there can be decrease in demand. So the shift, it refers to the change in the demand not due to the change in the price but due to the change in the values of other variables influencing the demand. So it can either be increase or decrease. So as we have seen earlier that there are several factors other than price which affect the demand. तो जब भी प्राइस का चेंज होगा उसकी वजह से देयर विल बी कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन. बट अगर प्राइस कांस्टेंट है और दूसरे फैक्टर्स की वजह से डिमांड में कोई चेंज आता है तो उसकी वजह से डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट होता है आइदर राइट की तरफ और लेफ्ट की तरफ. So increase in demand का मतलब it means more demand at the same price or same demand at higher price. Increased demand means there will be rightward shift in the demand curve. Then there is decrease in demand, so it means less demand at the same price. The price is constant but the demand has decreased. So that is the case of decrease in demand. So in that case there will be leftward shift in the डिमांड कर्व. सो जो दूसरे फैक्टर्स हैं वो हो सकते हैं कि अगर कंज्यूमर का इनकम इंक्रीज हो गया है, सो इफ द इनकम हैज इंक्रीज सो ही विल डिमांड मोर ऑफ द गुड. सो द जो डिमांड कर्व होगा इट विल शिफ्ट टू द राइट हैंड साइड. एंड सिमिलरली अगर इनकम डिक्रीज हो जाएगा तो उसकी वजह से जो डिमांड फॉर द कमोडिटीज होगा दैट विल डिक्रीज. तो इसकी वजह से जो डिमांड कर्व होगा इट विल शिफ्ट टू द लेफ्ट. Similarly, the preference of the people for a commodity, say for smartphone, it increases. So the demand for smartphones that will increase. और अगर उनकी preference कम हो जाएगी तो उसकी वजह से जो demand हो जाएगा that will decrease. So this is the case of demand increase or decrease in demand. So we can understand it with the help of example. So in case of increase in demand, we see that suppose we have the example of increase in income. So if the income of the people increases, they demand more of the goods. So the demand curve hai, earlier it was suppose earlier the income was 50,000 rupees. So the demand curve was TD, and if it increases to 60,000 say, so the demand will so demand for the commodities, it will demand curve, it will shift upward. So there is increase in demand. So from DD we have moved to D1 D1. So this is increase in demand. And suppose अगर सैलरी किसी की या इनकम जो है वो डिक्रीज हो गई, so 50,000 from 50,000 if it decrease to 40,000, so the demand for goods it will decrease. So the demand curve it will shift leftwards. So from DD it has shifted to D1 D1. So this is the case of increase or decrease in demand. So all the factors other than price, they cause the shift in the demand curve. Whenever there is change in the price of the commodity, it will lead to movement along the same demand curve. So it will either lead to expansion or contraction in the demand curve. And when the demand curve is changed due to the factors other than the price, for example, if there is change due to income or due to change in the preferences or any other factor, then there will be shift in the demand curve. So the shift can either be increase, that is rightward shift, or decrease, that is the leftward shift. That is all about demand. I hope it's clear to everyone. Thank you.